Now, while speaking exclusively to India Today television, the parliament, he's MDMK's Member of Parliament, Vaiko, sparking a controversy and has made a remark that many have found questionable. Vaiko says that the North Indian states are 40 years behind the southern state of Tamil Nadu. And the reason because North India is weak because they are not proficient in English compared to the Tamilians. He's asserting that Tamil Nadu has surpassed all other states. He's dominating every sphere. He claims that the two-policy framework, language policy, has worked for them in Tamil Nadu. But the BJP has jumped in on this. They've said Tamil Nadu has surpassed everyone. If that is true, why don't they have 4 to 5 Nobel Prizes? Union Minister Majumdar also claiming that it's good to say that they are able to speak English, but speaking mother tongue is not a big deal. So here's what has happened. Northern states backward because they cannot speak English. We dominate almost all spheres, from the IT sector to medical sector, anything. We dominate. We are doing good because of the English proficiency. And how did the Tamilians know? Did we get the English proficiency? It is because of the two-language formula. We had Tamil and English. But as far as the northern states, they are far behind us. They are far 40 years behind us. There are so many lakhs of youth who go abroad for jobs. We talk about globalization. Then without English as a communication language with the world, how are we going to do better? See, our Tamil student who has learned Tamil and English, what would he take as a third language? He would take he wouldn't take Telugu or Malayalam. The next option would be Hindi. So it's an indirect way of imposing Hindi. Like, do the students need another third language? If they want it, let them study, but don't impose that third language is a must-have. अगर इंग्लिश हमारे लिए सब इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज से कोई परहेज नहीं है. इंग्लिश पढ़ना भी खराब नहीं है, आप पढ़िए. लेकिन मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, तमिलनाडु इंग्लिश में पढ़े इतना अच्छा कर रहा है, क्यों 4-5 नोबेल नहीं क्यों मिला तमिलनाडु से किसी को? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जब आप जाएंगे आपको अपनी मातृभाषा में ही करना है. इंग्लिश से भी बेहतर तमिल है. अगर तमिल में वो पढ़ पाए तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट होगा. हाँ, आप अच्छे जॉब मिल सकते हैं. यूनिक कुछ चीज आप अपनी मातृभाषा के अलावा नहीं कर सकते. आपके मदर टंग ही ऐसी भाषा है जो भाषा आपको पूरे विश्व में, आपको नौकरी मिल गया उससे कोई विश्व आपको पहचानेगा नहीं. आज उत्तर प्रदेश का बजट पूरे देश में सबसे बड़ा बजट है. आज सारे जो निवेशक हैं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं. हम तुलना थोड़ी करते, भारत के सभी राज्य अच्छा हो और बढ़े, लेकिन ये जो विदेशी मानसिकता वाले अंग्रेजों के पोषक लोग हैं जिनकी लॉयल्टी भारत के प्रति नहीं है, वो तमिल को तेलुगु को बढ़ता नहीं देखना चाहते. वो त्रिभाषा फार्मूला का झूठा दुष्प्रचार करके विभेद पैदा करना, क्योंकि उनको आने वाले जो चुनाव है उसमें डीएमके ने विकास कार्य कराए नहीं, उसकी जमीन खिसक रही है. अपनी जमीन को खिसकने से रोकने के लिए इस प्रकार का वो सुगुफा दे रहे हैं.